So, good evening, good morning, and good afternoon to everyone joining us here globally. So, today we present to you exciting opportunities for all you pharmacists who are in the way to navigate your path for global pharmacy jobs. So, welcome to Academically. Before I delve in further, I would like to speak something about Academically. We are headquartered in Australia. Academically is an edtech aimed at helping healthcare professionals like you to excel in your lives and careers. It was established by Dr. Akram Ahmad, who is an educationist, a healthcare professional with years of experience across several roles in India, Malaysia, and Australia. Academically offers you support to all healthcare professionals who wish to upscale their careers by migrating to Australia and other countries. On screen is founder and CEO Dr. Akram. He's a clinical pharmacist, lecturer, over 10 years of teaching and research experience. His goal is to help qualified healthcare professionals all over the globe, be it pharmacists, medical doctors, dentists, lab technicians, physiotherapists. In all, we cover all healthcare professionals. Next on screen, we have our academic heads, Dr. Kamlesh Soni and Dr. Snigdha Sharma. With their expertise and over of experience, probably 15 and 10 years of extensive experience to learn from there and validate our content and get continued education wherein they promote our all the courses throughout. So let's begin. First, I would like to draw your attention towards the OPRA exam. Well, OPRA exam, as many of you might now be aware, that it is the Overseas Pharmacist Readiness Assessment, which from March 2025 who are wishing to work in Australia, Australian Pharmacy Council, and talk about the PSI Society of Ireland. So the exam way for global pharmacists to work in Ireland. So second, we have Ireland after Australia. So when you look at the equivalence exam, it tests you the competence to have completed your studies and training from countries outside the European Union and are now willing to practice pharmacy in Ireland. Well, the PSI is the public body which regulates and oversees the registration process for pharmacists in Ireland. Clearing this exam will allow you to migrate, practice, and settle as a registered pharmacist in Ireland. So that was Australia and Ireland. Moving on to Gulf countries. In Gulf countries, the course that we have launched is the GRPLE, that is the Gulf Region Pharmacy Licensure Exams. Under this, we cover the SPLE exam, which is the Saudi Pharmacist Licensure Exam. Next, we have OMSB, which is the Oman Prometric Exam, followed by Kuwait, which is the MOH Kuwait, then QCHP, which is the Qatar Council for Healthcare Practitioners Exam. Then we have Bahrain, the BPLE, Bahrain Pharmacy Licensure Exam, and the UAE. And the UAE, as you all know, the three major exams, we cover them all, be it the MOH, then HARD, or the DHA for Dubai. Let's delve in a little deeper as to what each exam, these prometric exams, are all about. Well, for the Gulf countries, the collective term that we use for Gulf country exams are the prometric exams. These exams are the gateway for overseas pharmacists to practice in Gulf countries. These rigorous assessments evaluate a pharmacist's knowledge and skills to ensure that you meet the region's high healthcare standards. Successful completion of these prometric exams is a mandate to obtain a pharmacy license in these countries. Now, let's see what SPLE is. For SPLE, people who are looking forward to migrate to Saudi Arabia, the exam is SPLE.
This exam is administered by the SCFHS, that is the Saudi Commission for Health Specialities, and it make overseas pharmacists equivalent to pharmacists of Saudi Arabia by testing their knowledge and skills via the exam. Coming to OPE, that is the Oman Prometric Exam. So this exam is administered by the OMSB, that is the Oman Medical Specialty Board. Again, it will assess you pharmacists whether you are possessing the necessary qualifications and competencies to deliver quality pharmaceutical care in Omani healthcare system. So these are the two of the Gulf countries. Then we are moving on to the UAE. So for the entire UAE, there are three major exams. Talking about DHA, it is for Dubai specific. Then we have MOH. Then we have HAD, which is for Abu Dhabi. So these exams are essential for overseas pharmacists seeking licensure and practice in the UAE, that is the United Arab Emirates. So the DHA focusing within Dubai, MOH covering the entire part of the Emirates, and HAD being specific to the Abu Dhabi. Moving on to Kuwait, the exam is MOH Kuwait, and it evaluates again your knowledge and skills to various therapy and community pharmacy so as to practice in Kuwait. Then we are talking about the QC Qatar Council for Healthcare Practitioners exam, and it again assesses your ability to pharmaceutical knowledge and skills so that you can practice safely and effectively in Qatari healthcare system. Next, we have the Bahrain exam, which is the BPLE, or also known as the NHRA, that is the National Health Regulatory Authority exam. So again, it evaluates your knowledge and skills in pharmacy practice so that you can practice successfully in Bahrain according to their standards. So that was all about the exams which you can consider to migrate to, country or of your dream, of your choice. So now let's see how about the faculty who is going to help you achieve this dream via academically. So on your screen, we have a list of faculties who have undergone a similar journey, which you are going to now take so as to assist you and be there with you all throughout your journey to attain the exam with flying colors. These are our list of faculties having specialities in various aspects of pharmacology. So now let's see why choose Australia or Ireland or Saudi or any other Gulf country. Let's delve into it. So, well, if I talk about Australia, you can see there are a great number that you see, that is 185,000 PR visa offers that has been released by the Australia. If I talk about job vacancies, again a good number, followed by definitely a lucrative salary, annual salary to look up to, that is up to a lakh AUD. If I talk about Ireland, again easy work visas leading to PR visas with good number of job vacancies, and average annual salaries that can be expected is up to 66 lakhs INR. If I talk about Saudi, again, apart from the easy work visas and 2000 plus job vacancies, you can see you can expect around 1.9, that is almost 2 lakh per month of salary. That is to tax-free income for pharmacists. And if I talk about other Gulf countries like UAE, Oman, Qatar, Kuwait, Bahrain, again, lot of job opportunities to look up to for these countries with salary range of up to 2.7 lakhs monthly. Okay, so definitely something that we all, work for is ultimately the annual salary so that we can, apart from, our knowledge thirst that is there so that we do justice to our professions, definitely we have to support our day-to-day life with a good quality life, having a good annual income.
So this is why we choose the country of of our choice. For if you consider about Ireland, the benefits apart from work life, career opportunities, quality of life, free education, and healthcare access, you see there are short courses which supports you during your the clinical part of the exam. So there are a lot of pharmacy courses which you can take and get visas as like post study work visas, so as to comfortably take your career course ahead while appearing for the exam. And while talking about Australia, definitely a very high paying country. So there lies the obvious perks. Okay. Moving on to eligibility criteria. So let's draw your required to your dream country. Now, if you are dreaming for Australia, you have to sit for the OPRA exam. There, your eligibility would be a B Farm or a higher degree. But what you require is a transcript or a proof of active registration with your state pharmacy council. Okay. Now, if I talk about Ireland, here the eligibility, that is your professional qualification that is required, is either a 5 or 6 year continuous pharmacy degree, or else now they have come up with a little upgradation in their on their website, which says it a level 8 qualification on the NFQ, that is the Irish National Framework of Qualification. Their level 8 is also eligible for the PSI equivalence exam. Talking about SPLE, you require again a B Pharma or higher degree. There, along with this, you require a transcript of the state registration council certificate. Moving on to QCHP, that is the Qatar. Again, the eligibility is B Farm with a 2 years experience and additional 1 year experience. But if you are a master's degree in pharmacy experience, again, sorry, and exempted from writing the exam. Okay. So QCHP Qatar exam has three criteria: B Farm with a 2 year, Farm D with a 1 year experience, and M Farm with 2 year is completely exempted from the exam. Moving to Bahrain, Bahrain would require you for a BSc in pharmacy with a 5 years experience, or a Farm D, that is a 6 year degree course with 2 years experience. But again, registration in your home country is a mandate. And if I talk about the UAE, the entire Emirates, either a B Farm, Farm D, or a M Farm would work, but a 2 year of minimum retail or hospital experience is a mandate in Gulf countries of Emirates, along with your registration, that is in the state council. And if I talk about Kuwait, here again, B Farm and with the registration in your state council. Okay. So for will have an added advantage. Apart from that, bachelor's in pharmacy with different criteria for different countries as regards the work experience is a mandate. Okay, so that is in short the eligibility criteria as pharmacists to look up to migrate to such countries. Now let's move on to the English proficiency requirements. Well, for Australia, it is IELTS, PTE, OET. So with an individual band score of 7 and equivalent. For PTE, it is 65. For OET, it is 350 out of 500. That is a grade B. If I talk about Ireland, it is IELTS, OET, TOEFL, again, 7 band or equivalent. Now, if I talk about Gulf countries, the good news is English proficiency is not required for any Gulf country prometric exams.
Okay. So that is the, in short, a good distinction between all the countries for English proficiency requirements. Now let's see what are the steps for each exam that you might have to look forward to. So if I talk about your OPRA dream, the first step would be an initial skills assessment, followed by your exam, that is the OPRA exam. Having cleared your exam, you have to go for your English proficiency test. And having all these three in place, you can then apply for job and visa. The simple 4 steps to follow for OPRA. Now, if I talk about your PSI migration dreams, well, for Ireland, the process that they follow for the non-European Union, that is the third world countries like us, is a TCQR process. That is the third country qualification recognition, which in turn is actually now with amendments is a 3-step procedure. So the first step is your application for recognition of your qualification, that is like skill assessment, followed by your equivalence exam. Having cleared the exam, the good news is here that no adaptation period now. So adaptation period has been waived off by the PSI equivalence schedule. So after clearing your equivalence exam, you straight away go to the PRE. Okay. So that is the TCQR process. Now it is a simple 2-step procedure basically, if I sum. That is application of recognition followed by your exams. Okay. So having cleared your TCQR process, you then go for your English proficiency for your first time registration in Ireland. So that is the 3 simple steps for PSI. Moving on to SPLE. For SPLE, again, the first step would be a document verification, or the what you call as data flow, that typically requires 25 to 35 days, followed by your classification. And having receiving your eligibility upon the classification, you can apply for the exam for almost 3 times in a year. All right, because the eligibility is valid for 1 year and you're required to pre-book your exam at least by 3 months. So which is why I say 3 times. And so yes, you appear for your MCQ exam, and then having cleared it, you can apply for the registration with SCFHS. Mind you, no language test required. Talking about DHA, that is Dubai, again, similar process, document verification, also known as the primary document verification, that is PSV, which is data flow, followed by scheduling your prometric exam via the Sherian account. Having created your account, you can now book your exam and appear for it, that is the MCQ exam. Having cleared the exam, now on the account, you go to your account, which is the Sherian account, and you download your registration there. Okay, that is the application for registration with DHA. Moving to MOH. For MOH, compared to the DHA, it is the MOHAP account. Again, the process remains quite similar, wherein you create the account, do your data flow, schedule your MOHAP exam via the Prometric website. Having done that, getting your eligibility, you sit for your exam, and then having cleared the exam, you apply for registration with the MOH. So if I summarize the entire thing, for the Prometric exams, it is the data flow followed by exam clearance and then registration. That eventually will lead to job. So let's delve into exam specifics. First, speaking about OPRA. For OPRA, you can on screen are the exam centers which you can find all over India. Then the exam dates, if I talk about, the OPRA exam is conducted thrice a year, and the dates for the year of 2025 are between 3 to 5th March. For July, it would be 14 to 16 July, and for November, it would be 24 to 26th of November. So you can take a screenshot for the dates. And how is the exam conducted? Well, the OPRA exam consists of only one paper comprising of 120 questions. The exam has to be completed in 2.5 hours. There will be no break provided. So that is in short the details of OPRA exam.
Now, if I talk about, many of you might be wondering what is this rash methodology for exam assessment of OPRA. Well, the rash model of assessment weighs the answer of the candidate and the difficulty of the question, then decides whether the candidate is eligible for the exam. So the chances of difference between the examinee and the question. So basically, if you've heard about CAT like exams, it is a competitive adaptive testing. Okay. So the APC has been using the rash methodology to select and score questions for the intern written and the CAOP exam since 2020. Now the OPRA exam also uses the rash methodology. Okay. So that is rash methodology. Moving on to OPRA exam content areas. So the exam commences in March 2025 and it will constitute of one paper. Major content areas would be, with their weightage, biomedical sciences would take a 20%, medicinal chemistry and biopharmaceutics 10%, pharmacokinetics and pharmacodynamics would be 10%, pharmacology and toxicology would be 15%, rest 45% would be therapeutics and patient care. So that was about OPRA exam. If I take you through the PSI exam details, the exam centers, that is for both the MCQs and OSCEs, are held as remote online proctored. Exam dates, well, the PSI conducts the equivalence exam 2 to 3 times in a year, being roughly around April, October, and December. And the exam days, if I talk about, be it in April, October, or December, it is conducted over 2 days. Day one being your MCQ plus written OSCE, followed by day two of verbal OSCE. And if we get into little nitty-gritties of the exam, well, the MCQ exam consists of 80 questions over 150 minutes. The written OSCE constitutes of 2 stations, that is 20 plus 20 minutes, with a 5-minute break in between. That would be day one. Day two would be verbal OSCE, comprising of 6 stations, each station for 7 minutes, that is 1 minute for reading and 6 minutes for performing the OSCE. And the entire course at Academically is covered within 16 weeks. Now, coming to the prometric exams. What to expect here? Well, this exam tests you for your major pharmacy areas like social behavioral administrative science, pharmaceutical science, pharmaceutical care and disease, pharmaceutical calculations and compounding, clinical sciences, and basic biomedical science. And again, we cover the entire course within 16 weeks. And you can expect your exam centers to be approved prometric testing centers, which is located locally and internationally. Exam dates, it is conducted 3 to 4 times in a month, and you can schedule your exams up to 3 months in advance. Results are typically declared online within 1 to 6 weeks after the exam. So that is in short about the prometric exams. Now let's take a look as to what the number of sessions or the number of MCQs, around what time duration for each Gulf country exam. If I talk about SPLE, that is for Saudi, is conducted over 2 sessions, and each session comprising of 105 MCQs. Each session would be a 2-hour session, and the passing score is 60%, that is typically 536 out of 100. You need to score so as to clear the exam. Talking about the Oman Prometric, it would be a 1 session, 100 MCQ exam over 2.5 hours. For DHA, MOH, hard, again, 1 session of 150 MCQs over 2 hours, 45 minutes. For Kuwait, it would be again same as UAE, same for Qatar and Bahrain. So basically the entire UAE, Kuwait, Qatar and Bahrain would be 150 MCQs in a session, but the time difference will be different for all. Like if you see the UAE and Qatar, the time difference would be 1 hour.
and Kuwait, it would be 2 hour 45 minutes. For Qatar, you'll get 3 hours. For Bahrain, again, you get a 2.5 hour passing score is above 60%. Exam details. Talking about Oprah, you would require a degree, a transcript, a birth certificate, valid passport, government ID proof, passport size photograph, and your pharmacist registration certificate. That is your state council certificate. Talking about PSI, here the process is little elaborate, wherein you have to fill 3 forms, that is the application form, your statutory declaration form, and an identity form. Along with that, the documents that would be required would be on screen, that is degree, certificate, transcript, work experience, valid passport, government ID proof, passport size photograph, pharmacy council certificate. Good. Okay, that would be your documents. And when I come to the good standing certificate, this is the third party that is involvement is here, wherein your council will give the good standing certificate directly to PSI. Apart from this, a syllabus copy and transcript would also be required to be sent by the regulatory authority, that is your college or university, directly to the PSI. Okay. So this process is a little elaborate, which is why we encourage all our candidates who are applying for Ireland to start their skill assessment as soon as they enroll with us. Coming to document requirements for Gulf region, again, it is quite similar to rest: a degree, transcript, work experience, passport, government ID, passport size photograph, pharmacy council certificate, and a good standing certificate. So moving on to visas in Australia, we have different types available, that is PR, work visa, study visa, details of which can be, discussed individual specific. While having experience in the relevant field is not mandatory for taking the OPRA exam, we guide students to get 1 to 2 years of experience while preparing for the exam, as it helps in getting visa. So please make a note of this point, that the experience required for the 482 visa will be reduced to 1 year effective November 2024. Moving on to visa requirements of Ireland, well, again, you can look up to PR and critical skills visa. So get student or work visa after passing the PSI exam, work there for 3 years on critical skill visas, and apply for a permanent visa in Ireland. So basically, the getting a permanent residency in Ireland is possible in as short as 5 years. Now, if you talk about the study options that is that you can consider while doing your PRE exam, while having migrated to Ireland, these are the few study options which are quite economical and enables you to get a post-study work visa which is valid for 2 years. Okay, so these study options are also closely related to your profession, helps you. So, well, why academically for GRPLE preparation course? Well, here I would like to take a moment and say why not? Well, academically readies you for the prometric exams, which is the initial step to become a licensed pharmacist in Gulf countries. This course is designed in a way that will provide you a comprehensive review of all the Gulf country exams curriculum as laid by the respective administrative bodies. Same goes for OPRA. Well, the OPRA preparation course by Academically is a resourceful course by for global pharmacists to help you clear the overseas pharmacist's readiness assessment. The sole aim of the course is to provide all the necessary study materials, mock exams, and support for the students to ace this exam with flying colors. Moving on to the PSI, definitely again, we at Academically, we have designed the course in a way so as to focus on each and every requirement that the PSI equivalence requires, be it the OSCE, be it the MCQs, be it the written OSCEs, we prepare you. So let's have a look into our program highlights, what we offer, how we offer,
how we offer. So, why we instructor-led self-paced content over LMS. We provide you one-on-one mentoring support over our Discord channel. Apart and work life to attend more and more of live sessions. We do have all the lectures recorded, which is, available to you at any time of the day for you to just go and listen to the recording, come back with your doubts over Discord. So as good as attending your live sessions. Apart from this, we have 1,000 plus mocks and recalls and feedback and assessment sessions to support you all throughout the journey. Last but not the least, we also provide you tips on CV writing, cover letter generation, and we do guide you on placements and visas. Definitely, the CV writing session will be the last 2 points that are there that is valid upon clearing your exams. So that is our program highlights. Now, let's discuss the fee structure. Talking about OPRA, the APC fee would be, the breakup would be, the initial skill assessment fee would be roughly around 810 AUD, exam fee would be 2190, and the English proficiency exam fee would be around 400 AUD. Okay. So kindly make a note, the fees for OPRA exam will be 100 AUD less than CAPS. So this is the updated initial skill assessment structure. The eligibility check would be 810, work experience assessment 200, all in AUDs, and skill assessment outcome 300. Total with work experience, it amounts to 1310, and without work experience, it amounts to 1110 AUD. So currently, again, there is a note, the APC is currently not accepting work experience assessment. Let's have a look into the PSI fee structure. So this is the TCQR process, so comprising of the two major steps that I said, that is application of verification followed by the exams. So the entire fee would be a one-time payment, that is 1,500 euros. However, I'd like to point this out here that currently the PSI website is under major modifications. So they might change the application process. English proficiency test would be again around 300 AUD. Moving to the SPLE exam, the data flow would be 840 reals, followed by classification, that would be 200, and then the exam fee, but that would be 289 USD. Talking about other prometric exams, as you can see on screen, all the data, which is, different for each, and we can guide you at any point. So on screen, like the data flow charges is separate and the exam fee is separate. Okay. So why trust academically? Well, after the presentation, I'm sure there must be a lot for you to take over. But with 1,000 plus positive reviews, we are qualified faculties have undergone similar journey. We have a course content that is of high quality, well researched, and precise, that is in accordance with strategies to clear your exams. We have a community of alumni of ex-students who are successfully placed in their careers. Academically provides you constant counseling, mentorship, and motivation throughout your journey. Last but not the least, please do visit us if you are still under any type of query in our office in Australia or India to discuss with Dr. Akram and team. Further, I would like to draw your attention to our
publications on the Economic Times, Farmer Tutor, News Nation, News 18, Startupedia, where you can see Dr. Akram, how he has been, you know, cherished and celebrated by everyone all throughout. You can also find us featured in the Outlook, in the Hindustan Times, Times of India, Z News, Startup Rise. So definitely a commendable work by Dr. Akram, and his stories definitely goes above. Do check out our rating on Google with a great number of reviews and a 4.7-star rating. Apart from this, we do understand that the entire course and the entire career that you finally decide to take involves a lot of money. So we do provide you financial assistance via interest-free loans and EMI, via the EduOnes and the Kuhu Edu FinTech. We also provide scholarship for abroad programs, that is the ASAP, the steps of which is quite simple. Just visit our website, register for the test, clear the test, and bag the scholarship. Last but not least, I would like to draw your attention for our Med Connect that is going to happen now in Chennai. If any of you are present here today is happen to be in Chennai, can attend this session, offline session with Dr. Akram himself live. This is on 23rd October, starting from 9 a.m. in the morning. You can scan the code and register now free. Apart from that, you can find us on social media handles like Instagram and YouTube. You can just scan our code and find us there. This is our contact details. And thank you so much for being patient and listening out to me. So now we will, stop presenting and open the session for Q&A, wherein each one of you would be allowed to unmute. Kindly do not unmute before we, call out your name, because that would help us to attend each of your queries one by one in a hassle-free manner. Okay. Requesting everyone to please be on mute. We will call out your names according to the queue, and we will allow each and every one of you to, speak up your queries. Hello, Dr. Madhushri. Yes, sir. Should I Sir, take from here? The Q&A. Yes, sir. So should I open the Q&A? Thank you. I'll take it from here. Yeah. Thank you, sir. Okay. We have Saif Ali. Saif Ali, please unmute. Saif, can you hear me? Okay. Yes, sir. You can ask your question to Dr. Akram. He is present here. Saif, अपना questions जो भी है वो बताइए. Saif. हेलो. हाँ जी, हाँ जी. हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी. मॉक एग्जाम के लिए जो एमओएच के जो कुवैत के लिए एग्जाम है जी, तो वो ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे क्लासेस? जी जी सर, ये आप बताइए. हाँ, क्लासेस हमारे सारे ऑनलाइन है. सिर्फ इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ऑनलाइन क्लासेस होते हैं. आप अपने कंफर्ट से उसको लाइव भी अटेंड कर सकते हैं और रिकॉर्डेड भी होते हैं. तो एज पर योर कंफर्ट यू कैन स्टडी द क्लासेस. सर, बैच कब स्टार्ट होंगे? हेलो. ये हर महीने एक बैच होता है सैफ, तो जी जी. व्हेनेवर यू वांट यू कैन ज्वाइन. तो हर महीने एक न्यू बैच चलता रहता है. तो अभी नेक्स्ट वीक जो है आई थिंक 1 नवंबर को न्यू बैच होने वाला है स्टार्ट. सर, एक और क्वेश्चन था मेरा.
अभी चेन्नई में जो होने वाला है वेबिनार, उसमें सर हाँ, वो तेलुगु लैंग्वेज में वहाँ मतलब वेबिनार होगा या फिर इंग्लिश में हिंदी ही इंग्लिश होगा। में हमको होगा? इंग्लिश, हमको थोड़ी तेलुगु आती है, बट हाँ जी। देयर इज सम टीम मेंबर्स है। आप कहाँ से हो? झारखंड से है सर। तो दिल्ली में भी होने वाला है, तो दिल्ली में भी आ सकते हो। दिल्ली में सबका कौन सी डेट पे सर? अभी डेट कंफर्म करेंगे दिल्ली का, पर अभी तो ये चेन्नई का कंफर्मेशन है। हाँ तो फिर दिल्ली ही आ जाएंगे सर, वो बेटर रहेगा। हाँ हाँ, ठीक है। सर हेलो सर यस नोमन। Yes, जी Newman, सर please ask your question. Yes. सर मेरा नाम नुमान खान है, मैं पाकिस्तान से हूँ सर। मैंने बहुत ट्राई की सर, बहुत बार अप्लाई किया है सर, लेकिन आप लोगों की से कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। क्वेश्चन करो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है बताओ। क्वेश्चन ये है सर कि मैं आप लोगों का कोर्स लेना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया एग्जामिनेशन के लिए ओपरा। कब स्टार्ट होगी सर आपकी न्यूट्रिशन ओपरा की? ओके, लीव योर फोन नंबर इन द चैट बॉक्स। तो अभी आपको कनेक्ट कर लेगा हमारी टीम, ठीक है। अपना फोन नंबर जो है विद कंट्री कोड, जो व्हाट्सएप नंबर है वो छोड़ दो हमारे चैट बॉक्स में, तो अभी हमारी टीम अच्छा, कनेक्ट कर लेगी आपसे। और कब स्टार्ट होगी सर आप न्यूट्रिशन ओपरा एग्जाम की? अभी चल रही है वो, तो वो हर महीने एक बैच चलता है हम लोग का ऑपरा का भी, ठीक है। अच्छा सही, हाँ, अभी ठीक है। लास्ट 2 वीक पहले हमने स्टार्ट किया था वो वाला बैच। अभी एक न्यू बैच और स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक। So you can join in that batch. You can leave your phone number in the chat box. So we will connect to you individually. ओके सर, थैंक Okay. Okay. Thank you. Thank you. Rajveer Singh, please unmute. Rajveer. हेलो सर, सर से Hello. सर। Hello. सर मैंने डिप्लोमा फार्मेसी किया है, डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है 7 ईयर का है एज ए फार्मेसी असिस्टेंट। तो मैं यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे आपकी लास्ट वीक में एक देखी थी ना वीडियो, आपने ऐड किया है, तो उसके बिहार पर मैं जानना चाहता हूँ कि मैं एलिजिबल हूँ सर फॉर दैट। कहाँ के लिए? यूएसए सर, यूएस। यूएस अमेरिका। जी सर, तो डिप्लोमा कहाँ फार्मेसी। बताया? जी सर। कौन सी वीडियो में बताया था हमने डिप्लोमा वाले यूएस जा सकते हैं? सर I don't know sir, but on the behalf of pharmacy technician. नहीं, कोई जॉब नहीं होती। Okay, how about sir Australia sir? Am I eligible for that? First you need to pass English test. तुम इंग्लिश में बोल पाओगे या नहीं? Yeah sir, I have my IELTS score sir. They are very poor in the English. They are not able to pass it. Clear the English test. Otherwise you can go in the first. Okay sir, I have my 6.5 score in IELTS sir. 7 at least then not 6.5. Okay sir, PT acceptable है तो PT कर लें। हाँ, और वो तो accepted है, PT दे सकते हो आप। ठीक है सर, अगर ये डन होती है तो फिर मेरा फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए हो जाएगा। यस, आपका असेसमेंट होगा, वो असेसमेंट होने के बाद अप्लाई। जी सर, ठीक है। सो सर यहाँ पर फिर ओपरा के लिए तो नहीं सेट होना पड़ता वहाँ पे? नहीं, उसको एग्जाम नहीं होगा डिप्लोमा का, ओनली So there is इंग्लिश का करना होगा। okay sir, there is a direct entry for that PR, like Yes, and that PR you can apply. like for pharmacy technician, right? Yes. Okay, all right sir, thank you. एप्लीकेशन के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है, ओनली टेस्ट पास करना होता है, और इंग्लिश के बाद में यू कैन अप्लाई फॉर डायरेक्टली वीजा। इसको असेसमेंट होगा और इंग्लिश के स्कोर की बेस पे आप यूआई एंड वीजा पास कर सकते हैं। Okay. Hello, good evening, sir. This is Karan from Surat. Yes, Surat Karan, next. please ask your question. Yeah, good evening, Akram sir. This is Karan from Surat, Gujarat. Yes, good evening Karan ji, how are you? How are you, sir? I am fine, sir. Yes Karan. Hanji. I am B.Pharma graduate from the Bangalore, and I am currently as a medical representative, and I am currently possessing a 3 year of experience as a field executive. I have connected to Diljit from your academy. He is located at the Dehradun office. Yes, वो दिलप्रीत यहाँ पर ही है। तो बेसिकली यू नीड टू पास। तो आप कहाँ जाना चाहते हो? ऑस्ट्रेलिया? सर ऑस्ट्रेलिया, वन एंड ओनली ऑस्ट्रेलिया। ओके, बट तुम्हारा ये एग्जाम जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है ना, ये तो एमआर का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता।
Okay. हाँ, so you will counted as a fresher, और अदरवाइज आप किसी फार्मेसी पे काम करना स्टार्ट कर दो, किसी रिटेल फार्मेसी पे या हॉस्पिटल फार्मेसी पे, वो आपको हेल्प करेगा। Sir, with all due respect, from 2019 to 2022, I have worked as a medical representative, and from 2022 to 2024 till now, I am having my own show. Yes. So in that case, you can show that you are a self-employed retail pharmacist. So retail Okay. pharmacist जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में if you can pass the OPRA exam. Right. And sir, the one question about the OPRA exam is like in CAPS there was a part of the medicinal chemistry. So when compared to CAPS in OPRA, same portion is there or a little bit less नहीं, it is जो भी there? उनका सिलेबस है OPRA का उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। तो केमिस्ट्री को अभी कम कर दिया गया है। अर्लियर बाद 30% अच्छा। क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, नाउ अभी 10% ही आएंगे। ठीक है, Okay, मोर sir. क्वेश्चन फ्रॉम कमिंग फ्रॉम फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल पार्ट मोर आएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर जो रेस्ट मेथोडोलॉजी है उसमें जो आपने मतलब एक वीडियो भी देखा था उसमें एक पर्टिकुलर स्केल होता है, तो उसमें कोई सर मिनिमम मार्क्स होते हैं या पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं सर कि परसेंट टू किसका परसेंट अगर वेरी करेगा, परसेंट टू किसका परसेंट अगर वेरी इजी करेगा, पेपर है मगर तो 50% ओवरऑल होना चाहिए। सॉरी सर। परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा, पर 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। अच्छा, ठीक ठीक है सर। ओके, थैंक यू करण। थैंक यू Okay, सर। I Hello, sir. request. This is Wait, Sahil Sahil, from. Sahil, your name, your number will come. Just wait. Please raise your hand. I suppose. Okay. Thank you so much for raising your hand. We have Yogesh Bapkar. Yogesh, Yogesh. can you please unmute? Yes, sir. Hello, sir. How are you? I'm good, Yogesh. Thank you. Yes, Yogesh. सर मेरा क्वेश्चन ये था, सपोज ओपरा देने के बाद एग्जाम क्लियर होती है, ओके, इंग्लिश एग्जाम भी क्लियर होती है, तो मुझे वीजा कौन से कैटेगरी से मिलता है उधर ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया में वीजा की 3 प्रोसेस है। तो आपको पीआर ओके, वीजा मिल सकती है डायरेक्टली यस सर। गवर्नमेंट से। पीआर वीजा नहीं तो आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वर्क वीजा मिल सकती है आपको, और वो भी नहीं ओके, तो आप स्टडी वीजा में जा सकते हो। तो 3 तरह का, देयर आर 3 वेज टू कम टू ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरा वाला पीआर कौन सा वीजा, बोले? वर्क वीजा और स्टडी वीजा। ओके, नहीं सर, अभी ओपरा एग्जाम खत्म होने के बाद जो 1 साल की इंटर्नशिप है उसके लिए कौन सा वीजा मिलेगा फिर? अरे क्योंकि वही वो तो बोल रहा हूँ इंटर्नशिप। भाई, ये तो आप उसमें कोई वीजा चले जाओ, आप इंटर्नशिप करनी है आपको। इवन इफ यू आर गोइंग ऑन स्टडी वीजा, उस पर भी ओके, वो 1 साल की इंटर्नशिप नहीं होती, वो आवर्स होते हैं, 15 से ओके, 75 आवर करने होते हैं वो आपको ओके, जो इंटर्नशिप में। तो वो इवन इफ यू आर गोइंग ऑन स्टडी वीजा तो आप पार्ट टाइम करोगे, अगर आप वर्क वीजा जाओ तो आप फुल टाइम करोगे। तो पीआर वीजा भी मिलता है, वर्क वीजा भी मिलता है, स्टडी वीजा भी, तीनों तरह के चांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन यूके ओनली स्टडी वीजा होता है वहां पर। आयरलैंड में भी ओनली स्टडी वीजा होता है, वहाँ पीआर वीजा नहीं होता है, वहाँ वर्क वीजा नहीं होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में तीनों चांसेस होते हैं, पीआर वीजा, वर्क वीजा और स्टडी वीजा। ओके। तो इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करनी होती है 15 से 75 आवर, वो आप कंप्लीट करते हो किसी वीजा के ऊपर। मतलब एग्जाम खत्म करने के बाद देयर इज नो एनी स्पेशल वीजा कि मैंने एग्जाम क्लियर की है और मुझे अब इंटर्नशिप चाहिए तो मुझे वीजा चाहिए, तो ऐसा हाँ, तो सेपरेट वीजा नहीं तो आप इनमें पीआर से वीजा किसी? अप्लाई कर सकते हो। ये 3 साल की वैलिडिटी होती है कैप ऑपरा एग्जाम। तो वंस यू पास ऑपरा एग्जाम, जैसे 3 इयर्स आपको मिलेंगे ना, तो 3 साल में आपको कोई वीजा मिल जाएगा, आप जा सकते हो वहां पर। ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you, Yogesh. Next we have. Wait. Your number प्लीज will वन come. बाय वन सबका नंबर आएगा, तो आई एम हियर, तो नो वरी। Next we have Dr. Saurabh. Dr. Saurabh. Hello, sir. Good evening. गुड इवनिंग। Sir, I am a founding graduate, 2023 batch pass out. So most of my doubts are actually resolved by others' questions. I had my last question would be, sir, I am working as a clinical research coordinator. So is this experience counted? नो, दिस इज Okay. नॉट ए फार्मेसी जॉब। ये Okay, क्लिनिकल sir. कोऑर्डिनेटर कोई बन सकता है, डेंटिस्ट भी बन सकता है, बीएमएस वाले बन सकता है, इवन बीएससी वाले भी बन Correct. सकता है, राइट? This is not a Yeah, correct, license, sir. is not required to work as CRC, yes CRA, Okay. right? तो ये फार्मासिस्ट की जॉब के अंडर में नहीं आएगा, तो ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। They need practicing pharmacists, whether it is hospital pharmacist
क्लिनिकल फार्मासिस्ट या रिटेल फार्मासिस्ट, ये सब काउंट होंगे। Okay, sir. Thank you. ओके, थैंक यू। Thank you, Saurabh. Next, we have Sahil. Sahil, please ask your question. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था आपसे कि जैसे एग्जाम क्लियर हो गया तो उसका जो पीआर वीजा है तो उसका क्या मतलब क्राइटेरिया होता है सर, उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यही क्राइटेरिया, आपने एग्जाम पास कर लिया, नाउ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई ईओआई, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होता है बहुत सारे स्टेट के अंदर। कोई भी स्टेट आपको इन्विटेशन देगा, देन यू कैन अप्लाई द पीआर वीजा। तो पीआर वीजा के लिए आपको एग्जाम पास करना मस्ट है, यही कंडीशन होती है उसकी। और मिनिमम 65 पॉइंट होना चाहिए व्हेन यू आर अप्लाइंग द वीजा। तो 65 मीन्स अगर आपके 50 पॉइंट्स भी हैं और 15 पॉइंट स्टेट के मिला के फिर 65 हो जाएंगे, तो अभी आप एलिजिबल हो गए वीजा को जो है एप्लीकेशन के लिए। और सर जो वर्क वीजा अगर उसके लिए जैसे आजकल सुने कि स्पॉन्सरशिप कम मिल रही है जॉब के लिए, तो फिर उसमें एकेडमिकली हेल्प करेगी? अमेरिका में कोई वीजा होता है क्या? आयरलैंड में कोई वीजा होता है क्या? यूके में कोई वीजा होता है? वहाँ स्टडी वीजा ही होता है ओनली। ऑस्ट्रेलिया में पीआर वीजा ही बोल रहा है, वर्क वीजा ही बोल रहा है और स्टडी वीजा ही बोल रहा है, तो आप दूसरे वीजा की तरफ जाओ। ऑस्ट्रेलिया में 3 ऑप्शंस होते हैं, पीआर वीजा, वर्क वीजा और स्टडी वीजा। सर स्टडी वीजा तो कॉस्टली बहुत हो जाएगा ना फिर? तो भाई कॉस्टली क्या चीज है? तुमने 20 लाख रुपए, तुमने ये 10 लाख रुपए लगा दिया बी फार्मा में, अब 10,000 की नौकरी लग रही है इंडिया के अंदर, क्या आप आउटकम ले रहे हो? तो जो आप ये देखो कि लॉन्ग टर्म में आरओआई कितना मिलेगा। अगर आपने 30 लाख खर्चा किया फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखो कि भाई अगर आपने वहां 3 साल रह लिया ऑस्ट्रेलिया में, कितने पैसे आप अर्न करोगे? तो आप, इट इज नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी जाओगे तो आप वहां देखा जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना आपने इन्वेस्ट किया, क्या आपको फायदा है, ये देखो आप, तो उसमें आप बेस्ट रहेगा अपनी इन फ्यूचर के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे एम फार्मा करने आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसकी कॉस्ट होती है 40-50 लाख, राइट? और फिर भी लोग जाते हैं, लाइन लगी रहती है उसके लिए, स्टडी वीजा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवन मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर कि 50 लाख रुपए अगर खर्चे करके आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते हो, आपकी जॉब लग जाती है, तो भी वो वर्थ है, आप वो रिकवर कर लोगे। पर आप अगर नहीं जाते हो, आप इंडिया में ही रहते हो, तो आप क्या कर पाओगे? आप ये देखो, आपके ऐसे हजारों फार्मासिस्ट इंडिया के अंदर है ना, तो आपको किसी न किसी कंट्री का तो एग्जाम पास करना होगा, आपको स्टेप लेना होगा, वेदर इट इज ऑस्ट्रेलिया हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो। पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया बेटर देन अदर कंट्रीज। यूएस के अंदर ओनली स्टडी वीजा होता है, वहां कोई दूसरा वीजा नहीं होता अगर आपने एग्जाम पास किया नेपलेक्स, राइट? सिमिलरली आयरलैंड में कोई वीजा नहीं होता, वहां स्टडी वीजा पे आपको जाना पड़ेगा। और यूके में भी वही है, इवन नाउअडेज इन कनाडा आल्सो वही है, स्टडी वीजा तो आप जाते हो वहां पर। तो सारी कंट्रीज में वही है ना, पर ऑस्ट्रेलिया में एडिशनल पीआर वीजा भी है, चांसेस वर्क वीजा के भी चांसेस है। तो वैसे वर्क वीजा के लिए एकेडमिकली हेल्प करेगी हमारे कि नहीं? अगर एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो एनरोल करें आपके साथ तो एकेडमिकली? वी आर नॉट एजेंसी, वी आर नॉट ए कंसल्टेंसी, वी आर चार्जिंग यू टू गिव यू द सर्विस, कोचिंग जो आपको दे रहे हैं ना, हम सारे बच्चों को गाइड करते हैं, हमको गारंटी नहीं दे रहे कि आपको जॉब लगवा के देंगे, जैसे आपका वो है ना, आप कोई सी भी जाओ, तीनों पे आप कोई भी जा सकते हो, पर हम गाइड करेंगे कि आपको पीआर वीजा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या उसके चांसेस हैं, वर्क वीजा कैसे मिलती है, स्टडी वीजा के लिए भी हम गाइड करेंगे, वो सारा हम गाइड करेंगे आपको, हर एक बच्चे के लिए, दिस नॉट जस्ट फॉर यू। तो सर जो आपके एलुमनी स्टूडेंट्स वो नहीं हेल्प कर सकते हो जॉब दिलाने में आप? कौन? जो मतलब जो सर आपसे पढ़ चुके एलुमनी स्टूडेंट्स जो सर आपके इंस्टीट्यूट एकेडमिकली के। आपने कहाँ से किया है बी फार्मा? सर इधर पंजाब से। और कौन सी ईयर में किया था? सर लास्ट ईयर 2023। मैंने बी फार्मा किया था, मेरे कॉलेज से मेरे हो गई शायद 14 साल है, आज तक मैं अपने कॉलेज में दोबारा गया ही नहीं। तो जो बच्चे हमारे यहाँ से पास करते हैं फिर वो निकल जाते हैं ना, कुछ बच्चे डेफिनेटली होते हैं जो हेल्प कर सकते हैं, आपके यहाँ का कोई बंदा होगा हमारे यहाँ से पास किया होगा, ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा, पर हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते ना कि आपको कोई जॉब लगवा के दे। अरे नहीं सर वो तो ठीक है, वो जॉब लग गई है ना, तो हम एलुमनाई ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, आप बात कर सकते हो, हम कोई भी बच्चे वहाँ पर टिप्स देते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, वो भी गाइड तो है नहीं, वो भी आपको जॉब लगवा के दे जो एलुमनाई है कोई भी। ओके ओके सर, ओके ओके साहिल, एनी मोर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस है? यस, नेक्स्ट कौन है? फातिमा। हाय फातिमा।
Good evening, sir. Good evening. Sir, I'm a PharmD intern now. I would Hmm. like to know, is there any opportunity other than pharmacist in Australia? Nothing. Become a Zero. clinical, No other opportunity. Australia not only in. gives a visa once you pass the exam. They have only three categories: hospital pharmacist, retail pharmacist, or pharmacy technician, industrial pharmacist. These are the only options to get the PR visa. For Yeah, I would applying, like to know what all are the opportunities in industrial pharmacist as an industrial pharmacist. yes, if you have 3 year experience in a pharmaceutical industry, especially in the manufacturing side, then you can apply that visa. Oh, without experience, we can't apply for it, right? Without experience, your degree is like a BSc or BA, BCom. No, no, you Yeah. need license plus experience. Then only you can claim that you are an industrial pharmacist. Without experience, you cannot. Okay. Thank you, sir. And I would like to know if I take any course over there, is it necessary for me to rewrite opera exam? Yes, I mean now only opera exam only. So you need to write, so they conduct yearly 3 times, March, July, and November. And once you pass the exam, you will getting receive a letter. It's called skill assessment letter. Based on that letter, you need to apply the visa. No, I'm actually asking that if I take the student visa or I choose to Yes, do any, you can go on a study visa first, then you can write the opera exam. You can. okay, then also I need to write the opera exam for Yes, working as a yes, pharmacist. Okay, yes. okay, If you need license to practice, you need to write opera exam because you are okay, doing equivalency or degree to Australian yeah, graduate. Yeah. okay. How much will time will I get a stay back in a student visa? Student visa for if you are going for master degree, it's going to be for 2 years. But if you can clear this exam, you can apply PR visa. It can be within 1 year you can get PR or you can get the job. Okay, So work with study visa for 2 years, and once you pass this, and once you complete your degree, then you will also get 3 more years visa, and that is called post study working visa. post study working visa. Yeah. So I will get a total of 5 year chance, Yes. right? Yes. Okay, thank you, sir. Um, and what all are the industrial pharmacist options over there? Same. I mean, Indian pharmacy need experience first in India, especially in Yeah, the manufacturing side. manufacturing. I would like to, if I start work here as an MSL, can I go and repeat the same work over the medical science lesion? There is no visa, but you are not listening. Basically, are you from which college did you did your farm day? I'm a PharmD Indian in Kerala. Which No, after college? uh, I've been in KMCT. Kerala last week, basically. Yo, I'm from KMCT, Kozhikode. Oh, Coimbatore. I was in basically in Kochi. So there's a Nehru College. Have been there. Another college is there. So I've been there. I think JKK from college. I was there basically. So I can say you are in dream basically. The family is a clinical pharmacist, and you will get a job in lot. So you are basically Yeah, you are in that phase right now. So I can say I'm also basically family graduate and from India. okay. So if you want to work in abroad, whether it is US, you need to go and study visa. Same for Ireland, same for Australia. Okay, for you. Since you are a fresher, you have no experience, so there is no other visa. Mm. So Actually, my husband. better if you can pass the exam in India, and then you can go on a study visa. You can do part-time your internship. Okay. Actually, my husband has cleared the CAPS exam, and he is waiting for the visa right now. Anyone you can go on a study visa. Whether your husband can go on a study visa, or you can go on a study visa. The other partner can be the dependent. Yeah, I'm planning to move like on a spouse visa, Yes. but So uh, actually there is more problems. The Australia is now providing visa right now for study visa pharmacists. they are providing a lot. No, study visa. No, he actually registered for AFRA.
Okay, so I'm talking to you. There is 3 ways I already mentioned. If you are Yeah. not getting PR, you can go on the other way or wait for some time. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Next we have Zubair Khan. Zubair, Yes, sir. please ask your question. Yeah. Assalamu alaikum, sir. Okay. सर सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो सर क्राइटेरिया है, जो पॉइंट्स हम बनते हैं सर, वो किस बेसिस पर बनते हैं सर? वो तो एज पर, एक्सपीरियंस पर, एजुकेशन पर, whether you are single or married, your score in English test, all those things. So you just go on Google and type PR visa point calculator. You will get, and you can calculate your own points. ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन और था सर, मतलब जो आयरलैंड में जो फार्मासिस्ट के लिए सर PSI एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए सर फॉर्म डी एलिजिबल है, ठीक है सर, बट मैंने आपकी एक B.Pharm भी एलिजिबल है. B.Pharm में भी एलिजिबल है? Yes, Dr. Kamlesh. Yes sir, we have mentioned this. हमने ये बताया था प्रेजेंटेशन अभी में. ये रिसेंटली चेंज हुआ है रेगुलेशन वहाँ पर. They need more pharmacists. तो उन्होंने अभी B.Pharm को भी एलिजिबल किया है. Earlier it was only Pharm D. ओके, तो सर इस पे एक वीडियो बना दीजिए, मतलब आपकी जो सारी की सारी वीडियो मतलब फॉर्म डी. हमारे पास 100 दूसरे काम है यार यहाँ पर. हम तो वीडियो बनाते रहते हैं. खैर डेफिनेटली बनाएंगे इसके ऊपर. ये न्यू अपडेट है बेसिकली, क्योंकि न्यू अपडेट है ना सर, अभी तक तो सबको ये पता है कि फॉर्म डी एलिजिबल है ये मतलब आयरलैंड के लिए. मैंने इस पर लिख लिया, तो एक वीडियो बनाता हूँ मैं नेक्स्ट वीक. ठीक है या सर, मेरा मतलब इसी पे एक क्वेश्चन था सर, जो मतलब आयरलैंड के लिए फॉर्म डी एलिजिबल था, बट मैंने आपकी एक शॉर्ट्स वीडियो देखी थी जिसमें आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं बाय द MSc. MSc हाँ जी सर. MSc क्या सर? MSc जैसे आपने की है, मतलब क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी से, मैंने आपकी उस पर भी मतलब एक शॉर्ट्स वीडियो देखी थी जिसपे आप क्विक वीज़ा कह रहे थे कि आप क्विक वीज़ा मिल सकता है. तो मुझे इसके बारे में सर डिटेल नहीं मिली, मैंने काफ़ी सर्च किया, बट इसी वजह से मैंने मतलब आपने वेदर यू आर B.Pharm और MSc और MS और Pharm D, तो फास्ट वीजा नहीं मिलेगा, वीजा सेम मिलेगा, स्टडी वीजा भी जाना पड़ेगा. वीजा के लिए नहीं, मैं फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ सर. क्या MSc से भी बन सकते हैं आयरलैंड में सर? अरे यार MSc में फार्मेसी, MSc इंडिया वाली MSc नहीं है वो. तो हर कंट्री में नाम अलग अलग होता है. कोई M.Pharm बोलता है, कोई MSc बोलता है, कोई M.Phil बोलता है, कोई MS बोलता है, और है वो मास्टर डिग्री इन फार्मेसी. अच्छा, ये था. जैसे इंडिया में क्या नाइपर में क्या मिलती है, नाइपर में MS की डिग्री मिलती है और बाकी कॉलेज में मिलती है M.Pharm की डिग्री, बट इक्वल डिग्री राइट इन इंडिया. तो ऐसे ही हर कंट्री का अलग नाम हो सकता है. उसका MSc हो सकती है, MS हो सकता है, M.Pharm हो सकता है, पाकिस्तान में होती है M.Phil बोलते हैं वहाँ पर. तो हर कंट्री में अलग अपना नाम है, पर है बात वही, मास्टर डिग्री है वो. अच्छा, मास्टर. ओके सर, थैंक यू. Okay, thank you Zubair. Dr. Kaustav, please ask. Good evening, sir. Yes. First of all, sorry for asking this question. Actually, I want to ask that in Australia, any university that providing in any distance education program, like in hands-on and go and from online studies. We are providing licensing exams coaching. Which course you are asking? Actually, I am sir BDS graduate right now, and yes, if you want to practice there, you need to write ADC exam. Yes, sir. If you want to practice in Australia, you need to write ADC exam, Australian Dental Council exam. Yes, sir. For distance education also, I have to write a Australian Dental Council exam. It is an online exam. So we provide coaching for this exam. Yes, sir. But any university providing online education like LDA, London Institution, providing all over the world and foreign students, like any university, sir? After licensing exam, there is no university. Coaching center will provide the coaching. Why university has to offer these courses? Okay, AIMS in India, they are offering any coaching for NEET or NEET PG in India? No, right?
So the private players will provide the coaching. So similarly, we are providing the online coaching for dentists. Those want to practice in Australia. There is no such course provided by any university. Actually, sir, I have asked another question. Actually, you are guiding that, but तुम हो कहाँ से यार? हिंदी समझ में आती है आपको? yes, sir. Yes, sir. तो हिंदी में बोलो ना, कहाँ से हो? क्या क्या क्वेश्चन है आपका? वेस्ट बंगाल से हूँ सर. एक्चुअली आई एम वांट टू आस्क दैट कि आप लोग तो हम लोग को गाइड कर देंगे जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आफ्टर क्लैरिफाइंग ऑल द एग्जाम. उसके बाद सर डिस्टेंस में कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हम कर सकते हैं क्या? डिस्टेंस कुछ नहीं होता है भाई, वहां जाके आपको स्टडी करना पड़ेगा. अगर आपको कोई डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है, तो आपको वहां जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में. ओके. एक्चुअली सर मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ यहाँ पर गवर्नमेंट, तो वहां जाकर मतलब कि होगा तो जॉब छूट जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा था. नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता. ओके सर, दे आर एश्योरिंग जॉब अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. Once you registered there, then you can start looking at jobs. You need to pass both exams. There are two exams, ADC1 and ADC2. And please leave your phone number in the chat box, so team will connect you individually. Today we are talking about a pharmacy, not for dentists. This webinar. Okay, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Next we have Ritesh. Ritesh, please ask your question. Good evening, Dr. Akram. Good evening. So I have completed my Doctor of Pharmacy, followed by which I did a clinical residency in oncology for 2 more years. I'm currently working as an assistant professor in one of the universities in Bangalore. From what I've been hearing in the entire conversation, they would require a clinical experience or a retail experience, right? So since I'm more clinical into pharmacist experience or hospital pharmacist experience or retail pharmacist experience, all Yes. experience you can show, whatever you have. Okay, correct. So since I'm currently working in academic field, so like I said, I already finished a clinical residency program, which was for 2 years, post my PharmD. And during that clinical residency experience, we were in the hospital. We were partly working as a clinical pharmacist, but we were also studying and we were doing research as well. So will that also be considered, or can that be considered as a clinical experience as well, post Maybe, PharmD? maybe not. So this is based on Okay. the purely job description. So you are Okay. studying. So तो आपको hospital आपको letter देगा ही नहीं, because Okay. you are saying you are working means you are earning the money, right? Yes. You Yes. need to show the evidence. तो वो evidence आप दे नहीं पाओगे तो वो ऑफिसर मानेगा नहीं इन जनरल. और कुछ Okay. कुछ So तो मान भी सकते हैं ना, मे बी. तो इसमें मतलब 100% कह नहीं सकते कि आपको केस में यस होगा या नो होगा. मे बी okay. नॉट होगा. 50% ओके, चांस है. बिकॉज उसके लिए एक्सपीरियंस लेटर उन्होंने एक प्रोवाइड किया है जिसमें लिखा है कि मतलब 65 to 70% हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस था, 10% टीचिंग एक्सपीरियंस था. सो ऐसे अगर डॉक्यूमेंट आप क्लिनिकल वर्क क्या बोल रहे हो? क्लिनिकल क्या एक्सपीरियंस आपका? आपने हमने डिस्पेंस किया पेशेंट को? नहीं, हम लोग मतलब क्लिनिकल फार्मेसी मतलब एक्सपीरियंस था हमारा. सो वी वर वर्किंग एज रेसिडेंट्स, जिधर हम लोग वार्ड राउंड्स पे जा रहे थे डॉक्टर्स के साथ, और जो भी क्लिनिकल एक्टिविटीज थे जैसे एडीआर मॉनिटरिंग, ड्रग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग, वो हमने किया था 2 years के लिए. तो हमने ऑन्कोलॉजी में किया था स्पेसिफिकली. तो वो जॉब के टाइम पे आपको हेल्प करेगा ऑन्कोलॉजी में, ठीक है? इन जनरल वंस यू पास द एग्जाम. बट एक्सपीरियंस काउंट होगा नहीं होगा वो मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज ये आपका एक कोर्स था जो आपने किया इन जनरल, फेलोशिप काइंड ऑफ, राइट? तो ये पैसे आपको मिल नहीं रहते, तो एक्सपीरियंस में काउंट होगा ही नहीं. बट आपको हाँ डेफिनेटली ये हेल्प करेगा टू गेट ए जॉब. क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कंसल्टेंट फार्मासिस्ट ऑन्कोलॉजी में आपको बहुत ही इजी रहेगा जॉब मिलना. ओके. तो अभी अगर ऑपरा एग्जाम में प्रिपेयर करके अभी लिखा, तो सिंस आई एम करेंटली आपको नॉट जॉब इन में बहुत हेल्प करेगा. आपको भी वहां पर भी ऑन्कोलॉजी में लोग मिलते नहीं है, बहुत ही Okay. रेयरली लोग काम करते हैं ऑन्कोलॉजी में. ओके, गॉट इट. तो अभी करंटली मैं अभी एकेडमिक में हूँ, बिकॉज अभी 2.5 years से मैं टीचिंग में हूँ, वेयर आई एम टीचिंग फार्मडी एंड एमफार्म स्टूडेंट्स इन द हाँ, हॉस्पिटल. तो वहां पर अगर आप दिखा पाओगे, अगर आप हॉस्पिटल में जाके काम भी करते हो ना, तो मे बी ये वाला एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है आपका. Okay, so if currently I can get an experience letter saying that I'm working and teaching in a hospital, so that can be considered as what you're saying, right? Yes. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Ritesh. Next we have Mohammad Shadab. गुड इवनिंग सर. सर मेरा क्वेश्चन है, मैं अभी बी
फर्स्ट ईयर में हूँ। मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है सर। सर क्या सब प्रिपरेशन कौन से करनी कॉलेज से पड़ती हो? कौन से कॉलेज से कर रहे हो अभी फार्मा? है? सर यूपी मुरादाबाद IFTM यूनिवर्सिटी। अच्छा, बहुत शानदार यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। अब बेटा ये ध्यान दो, इंग्लिश में ध्यान दो, ठीक है? और चुपचाप पढ़ाई करते रहो, जब 4th ईयर में आ जाओ तब कॉन्टेक्ट करना। और ये एग्जाम ओके पास के लिए 3 मंथ का कोचिंग चाहिए, नॉट 3 या 4 साल नहीं चाहिए उसको, ठीक है? तो अभी आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अच्छा सर। सर ठीक है? इंग्लिश में किस टाइप का पेपर आता है सर? अरे बोलना और लिखना अच्छे से सीखो इंग्लिश के बारे में, है ना? अच्छा अच्छा तो सर। वो काम आएगा अगर आपको जॉब करना है फॉरेन कंट्री में। ओके ओके अपना कम्युनिकेशन को आप इम्प्रूव करो, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू। ठीक। यस शानु गुप्ता। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर यस ये सर। सर ये अपरा एग्जाम प्रिपरेशन का ये कितना दिन तक कितना मंथ तक हम करते हैं? ये होता है 3 मंथ का। 3 मंथ का। और ये इसका फी कितना है सर? फीस आपका एक टेस्ट लेना पड़ेगा, उस टेस्ट की बेस पे जो भी आपके मार्क्स आएंगे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो आप अपना फोन नंबर छोड़ दो हमारे चैट बॉक्स में, तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। और सर ये ऑस्ट्रेलिया के लिए आप बोले PR वीजा, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, ये फ्यूचर के लिए कौन सा अच्छा रहेगा? कोई भी मिल जाएगा, आपको आना है, जो भी आपको पहले मिल जाए, वंस यू वट एवर यू रिसीव एंड यू जस्ट नीड टू कम। तो सारे वीजा ठीक ही है, कोई ऐसा वो नहीं है कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। ऑब्वियसली PR वीजा अच्छा ही होता है, तो PR वीजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है PR वीजा, वर्क वीजा में नहीं मिला तो आप स्टडी करने यहाँ आ सकते हो, फिर भी आपको जो है जॉब मिल जाएगा। और सर ये PR वीजा मिलने पर हम स्टडी कर सकते हैं क्या? हाँ, PR वीजा मिलने पर वंस यू गॉट PR यू आल्सो कैन स्टडी। और सर ये मेरा एक्सपीरियंस है 2.5 ईयर का इंडस्ट्री में, QC में। अभी नेपाल में हूँ मैं। हाँ, तो तो मैं आप वहाँ इंग्लिश पे का एग्जाम पास कर लो एंड यू कैन अप्लाई एज ए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। क्या अपरा एग्जाम सर? ऑपरा एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आप इंडस्ट्री फार्मासिस्ट जा सकते हो एज ए इंडस्ट्री फार्मासिस्ट। तो उसके लिए क्या अपरा एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा? इंग्लिश का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, IELTS का, ये PTE का। अच्छा सर। और सर ये ये रिसेंटली आप बोल रहे थे आयरलैंड के लिए B.Pharm ग्रेजुएट भी वहाँ पे अप्लाई कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है, वहां पर भी जो स्टडी करने जाना पड़ेगा आयरलैंड में। और सर वहाँ पे इंडस्ट्री में जॉब कैसे मिलता है? Once you got the visa, then you can go there and find a job. So we will guide you once you got the visa, once you done your assessment basically. थैंक यू सर। Yes, Kuldeep, can you please unmute? Last Kuldeep. गुड इवनिंग सर। Good evening. सर बोल रहा हूँ सर, जिसे मेरा अभी कंप्लीट हुआ है सर, बैचलर B.Pharm सर। हाँ, और मुझे ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है सर, तो सर मुझे इसकी प्रोसेस जाननी है सर। तो उसके लिए आपको ये ऑपरा एग्जाम पास करना होगा और एक इंग्लिश का टेस्ट पास करना होगा। दोनों जी एग्जाम पास करना मस्ट है, देन जी यू सर। कैन वर्क इन ऑस्ट्रेलिया। तो अभी आप जॉब करते रहो एज ए फार्मासिस्ट की, साथ में आप अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो इंग्लिश की या ऑपरा की, ठीक जी है? सर। और सर कैप्स और ओपेरा दोनों डिफरेंट है कि सेम है सर? अभी वो अभी तो अब तो तुम्हारे लिए क्या ऑपरा ही होगा, अब कैप बंद हो गया। अच्छे सर, ये पहले कैप्स था। हाँ, पहले कैप था, ये बंद हो गया, वो अभी ऑपरा होगा आपके लिए। तो सर ओपेरा थ्री मंथ का है सर? नहीं, वो कोचिंग हम लोग कराएंगे 3 मंथ का, जी सर। और वो एग्जाम एक साल में 3 बार होता है। तो वंस यू आर रेडी, देन यू कैन बुक द एग्जाम एंड यू कैन राइट द एग्जाम। तो सर 3 बार होता है एग्जाम, फर्स्ट बार में अगर क्वालिफाई हो जाए, मतलब पास हो जाए, तो फिर सेकंड बार भी देना पड़ेगा? नहीं, अगर आप फेल करके तो देना पड़ेगा, अगर आप पास हो गए तो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा सर, तो मान लीजिए फेल हो जाएंगे तो फिर फीस पे करना पड़ेगी सर? वो तो गवर्नमेंट की फीस है, वो हर बार लेगी गवर्नमेंट। इंडिया में कितनी आप है कोई सर? भी एग्जाम गवर्नमेंट देते की हो फीस तो अगर कितनी आप है फेल सर? करके बाहर नहीं दोगे, फीस क्या? गवर्नमेंट की फीस आपने कितनी है सर? एग्जाम दिया 3rd ईयर में और आपको नहीं क्वालिफाई किया, 4th ईयर में जी फिर फिल करोगे, फिर फी पे करोगे आप। सर, उसकी फीस कितनी है? 2190 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। हाँ,
इंडियन कितनी पड़ेगी सर? अब नियर जो भी अबाउट। पड़ेगी भाई कन्वर्ट कर लो। 5-6 लाख रुपए खर्चा होता है पूरा ऑस्ट्रेलिया जाने का। जी। और सर मान लीजिए वहाँ पे इंडस्ट्री में सुटेबल रहेगा या फार्मासिस्ट पे, किस में बेस्ट सैलरी रहेगा सर? फार्मासिस्ट में। फार्मासिस्ट में सर। हाँ। तो सर उसमें मतलब एक्सपीरियंस नीडेड है या केवल एग्जाम क्वालिफाई कर दे तो एक्सपीरियंस आप? आप वही बोल रहा हूँ, आप पहले जॉब स्टार्ट करो, साथ में एग्जाम पास करो। जॉब एक्सपीरियंस हर जगह नीड है, जी। एक्सपीरियंस हर जगह चाहिए होता है। जी सर। ओके, थैंक यू कुलदीप। थैंक यू सर। Here, Dr. Kamlesh, we can finish here. Sir, one more question. Rohit Kumar is there. Rohit. Hello, Rohit. You have any question? जी सर। Yes, ask. Yes, sir. जी सर, मेरा फार्मेसी कंप्लीट हो गया है 2022 में। तो सर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है? अभी तो बताया था इनको, सेम प्रोसेस बताया था अभी इनको, सेम ही कुलदीप को बता रहे थे, सेम ओपरा जी एग्जाम जी लिखना पड़ेगा। जी सर। जी सर, तो इसका सर ये कोचिंग की फीस कितनी है सर? आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, उस टेस्ट में आपके जितने मार्क्स आएंगे उससे आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके बाद मालूम जी जाए जी कितनी आपको पे करनी है। जी सर। ठीक है, तो कल को हमारी टीम कनेक्ट करेगा आपसे और दे विल गाइड यू। ठीक है जी सर सर। सर जी सर वो बोल रहा हूँ सर, वो टेस्ट जो होगा सर वो कैसे मतलब हम लोग के पास आई सर टेस्ट देने के लिए? हाँ, तो वो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर दे सकते हो, और वेट करो कल को। तो हमारी वेबसाइट पर अगर जाओगे आप तो वहाँ जाकर आपको वो मिल जाएगा। आपके वेबसाइट पे सर? हाँ, तो ये हमारी वेबसाइट है बेसिकली। आप यहाँ पे जाओगे, सारे कोर्सेज हम लोग कराते हैं कोचिंग, और ये है जी स्कॉलरशिप। इस पे क्लिक करके नाम पूछेगा, आपका ईमेल, फोन नंबर, एंड देन कौन सा आपको कोर्स की स्कॉलरशिप देनी है, तो वो आप जी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जी सर। थैंक यू सर। सर एक थैंक यू। मिनट है, मैं ये जानना चाहता मतलब पेपर सर कैसा रहता है, टफ रहता है या थोड़ा इजी मीडियम रहता है? जीपैट से इजी होता है। जीपैट दिया नहीं जी दिया? जी नहीं सर। तो यार कहाँ से फार्मेसी की है, तो जीपैट भी नहीं दिया आपने। सर एम फार्मा नहीं करना तो फिर जीपेट नहीं किए सर, बी फार्मा ही किए। तो आपकी नॉलेज टेस्ट करता है वो। आपने जी फॉर्म जी में सर। कहा, मतलब टेस्ट देना जरूरी होता है कि आपने क्या पढ़ाई किया 4 साल में, वो मालूम कैसे चलेगा। जी सर। आपको फार्मा करना है, पीएचडी करनी है, नहीं करना है, कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब इंडिया कोई गवर्नमेंट जॉब दो तो आप टेस्ट दोगे नहीं दोगे उसका? जी जी देंगे। प्रिपरेशन आपकी इवेल्यूट होती है कि भाई आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ठीक है, सर जैसे इसमें एक्सपीरियंस भी जरूरी है क्या, क्योंकि हम अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं? ऑटोमेटिक स्टोर का एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो। जी सर। सबसे पहले तो आप इंग्लिश का टेस्ट पास कर पाओगे या नहीं, इस पर डिपेंड करता है। कहाँ से हो जी आप जी रोहित? यूपी से हो, बिहार जी से? सर, उत्तर प्रदेश से, बस्ती से सर। हाँ, तो बस्ती वाले वैसे ही हो, तो पहले तो आप इंग्लिश के एग्जाम पास कर लो, बाद में तो फार्मेसी के आएगा एग्जाम। जी सर। मेन प्रॉब्लम यही है, ये यूपी बिहार वालों का, हिंदी जी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जी तो सर। पहले आप इंग्लिश पर ध्यान दें, इंग्लिश एग्जाम पास कर लें, बाद में आप ओपरा एग्जाम पास करें। तो सर इस कोचिंग में इंग्लिश की प्रिपरेशन भी होती है? इंग्लिश भी कराते हैं हम लोग। जी सर। तो पहले जो वो हिंदी कितना? वाले लोग हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, वो पहले इंग्लिश की कोचिंग ले लें और इंग्लिश जी पहले जी पास कर लो। अगर आप सर, इंग्लिश उसकी पास फीस कर, कितनी है? उसकी तो बहुत कम है वो भी। आप अपना फोन नंबर छोड़ दो चैट बॉक्स में, तो हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी कल को। जी सर। जी सर। उसकी उसकी 1.5-2 महीने कोचिंग होती है, और वो बहुत ही सस्ती होती है, 10-15 हज़ार की होती है उसको। जी सर। वो पहले आप वो पास कर लो, बाद में ये वाला कर लेना आप ओपरा का। जी ठीक है गाइस, देन थैंक यू सो मच। Sure, सर sir. एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है सर। हाँ, सॉरी सर। तुम उससे पूछो ना, तुम ऑलरेडी तुम यू आर कनेक्टेड विद दिलप्रीत, राइट? यस सर। दिलप्रीत से तुम क्यों नहीं करे, उससे तुमने वीसी नहीं किया अभी तक? सर वो एक लास्ट पूछना था कि जो एक्सपीरियंस है वो एमआर का नहीं काउंट होगा इसके लिए, ऑस्ट्रेलिया ओपरा के लिए? एक्सपीरियंस नहीं चाहिए टू राइट द एग्जाम, वो वीजा के सर टाइम पे नहीं चाहिए सर, होता है। हाँ जी वही वीजा के लिए पूछ रहा हूँ, एमआर का एक्सपीरियंस नहीं काउंट होगा? नहीं, छोटी रोटा तो कमलेश सर को आप काउंसलर उससे पूछो ना, उससे आप 1 घंटा वीसी करो, वीडियो पे बात करो उससे।
ठीक है? Okay, sir. Okay, Guys, okay, you sir. can book 1 hour free consultation with our team. Whether you join academically or not is up to you. आपका मर्जी है, ज्वाइन करो मत करो, पर फ्री जानकारी मिल रही है, वो उसको ले लो, वीडियो पे से बात कर लो हमारी टीम से, ठीक है? जी सर जी. Okay, bye. Bye. Thank you, all of you. Thank you, Dr. Akram. And if you have any more questions, our counselors will connect with you. Please send your or please share your email address and mobile phone with the country code in the chat box, and our counselor will connect with you all. Okay. Thank you so much for coming and joining.